So yesterday we studied Euler's theorem. Start with the next part, last part of the topic, right? All right, partial derivative of composite function. Partial derivative of composite function. What is composite function? Function of function is known as composite function. Right, one. Suppose u equal to f of xy and x is some function of r theta and y is some function of r theta. So the relation between the different variables is like this. U is a function of xy. So you might have understood that derivative of u with respect to x will be partial. Del u by del x and del u by del y. Okay. Then from this relation, x is function of r and theta. So derivative of x with respect to r, number of independent variables are 2. So derivative of x with respect to r is partial. In the same way, from this relation, y is a function of r and theta. So derivative of y with respect to r and derivative of y with respect to theta is partial derivatives. Okay. Now I want to write these three relations, 1, 2 and 3 together. So I'll write like this. U is a function of xy. X and y are functions of r and theta. Now I want to write the derivative of u with respect to r. Okay. So time being, I'll leave the xy. So I'll consider u as a function of r theta. Right? U function of r and theta only. Sir, So, x and x multiply comma है y से. X comma y. हाँ sir. R comma theta. Okay, so u is a function of x and y, and the x and y are functions of r and theta. So derivative of u with respect to r theta. So since number of independent variables are 2, therefore derivative of u with respect to r is partial, del u by del r. But u is function of x first, and then x is function of r. So derivative of u with respect to x. Whenever I am differentiating u with respect to x, number of independent variables are 2, x and y. So derivative of u with respect to x will be del u by del x, partial derivative, into derivative of x with respect to r. X is function of r and theta. So here we have written derivative of x with respect to r is partial, plus u is not only function of x, u is function of y also, and then derivative of y with respect to, it is not with respect to theta. Ultimately our aim is to get derivative of u with respect to r only. So derivative of u with respect to y written here, del u by del y. Then derivative of y with respect to r, del y by del r. This is the derivative. Now how to cross check? Theta. Let me complete. Let me tell everything. So see how to understand whether this is correct or not. So say from the first term, this is the term, this is the first term. Cancel del x del x. What is remaining? Del u by del r. And see what is on the left side. Yes, it is del u by del r only. Go through the second term. If we cancel del y, what is remaining? Del u by del r. Yes, we want del u by del r only. Okay. So this should not be theta. This should be r only. Right? Our aim is to get derivative of u with respect to r, not with respect to theta. Therefore, okay.
So this is one thing. So how we can cross check? Del x cancel from the first term, we are getting del u by del r. Del y cancel from the second term, we are getting del u by del r. See the last variable in denominator of every term. So r here, here also it is r, here also it is r. Last variable should be same. Now to find derivative of u with respect to theta, just I'll replace r by theta, that will be sufficient. Okay, so that will be del u by del theta equal to del u by del x into del x by del, replace r by theta, then del u by del y into del y by del r. R is to be replaced by theta. Now how to cross check whether this second derivative is correct or not? Go to the first term, right? Del x cancel. What is remaining? Del u by del theta. Yes, we have del u by del theta on the left side. See the second term, del y cancel, del u by del theta is remaining. Okay, and the last variable should be same, del theta, del theta, del theta. Getting everyone how the derivatives are obtained? Any doubt here? Very important to understand this. सबको समझ में आ गया? Sir, please repeat once. हाँ चलो और एक बार रिपीट करते हैं. So see what is given. U is function of x, y. X and y, both of them are functions of r and theta. So the relation between u, x, y and r theta is like this. U is a function of, यहाँ पे मैं हूँ अभी. U is function of x, y and x, y are functions of r theta. Now if we take derivative of u with respect to x, y, that will be partial. Number of independent variables are 2. Therefore, if we take derivative of x or y with respect to r or theta, they are also partial since number of independent variables are 2, r and theta. Therefore, okay. So let me start with the derivative of u with respect to r. This part, derivative of u with respect to r. So number of independent variables are 2, r and theta. So derivative of u with respect to r is partial, del u by del r equal to derivative of u with respect to x first and then derivative of x with respect to r. Now derivative of u with respect to x, number of independent variables are 2, x and y, so partial derivative del u by del x, and then derivative of x with respect to r. Number of independent variables are again 2, r and theta, therefore del x by del r, plus derivative of u with respect to y, so del u by del y, then derivative of y with respect to r, it is not with respect to theta, so del y by del r. Now how to cross check? See the first term, del x cancel. What is remaining? Del u by del r. In this way we cannot cancel. This is only for understanding. So del y cancel, del u by del r. Yes, we want del u by del r only. See the last variable, r here, r here, r here. Clear? Now to find derivative of u with respect to theta, you replace r by theta. That's it. Okay. So del u by del theta, r is replaced by theta. Del u by del x as it is, del x by del r. Here it is del x by del theta plus del u by del y, no change. Del y by del r, that will become del y by del theta. Hope you understood it. Okay. Second, any doubt till any doubt? No sir. No, sir. No, sir. Okay. Suppose इसको लिखा आपने, लिख दीजिए इसको. लिखा. Yes. हाँ, okay. So right, suppose u is function of r and r is some function of xy. So the relation between different variables is like this. U is function of r, r is function of x and y. चलो लिखो आप डेरिवेटिव क्या आएंगे. डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x पहला आएगा और डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड आएगा. लिखो आप, देखो आ रहा है या नहीं आपको. राइट इट, ट्राई टू राइट इट. कहां पे पार्शियल है और कहां पे ऑर्डिनरी है, ये समझना इंपॉर्टेंट. तो ऐसे आएगा derivative of u with respect to x, two variables, therefore partial del u by del x equal to derivative of u with respect to r. अभी partial आएगा या ordinary आएगा?
How many independent variables? One only, na? So Yes, sir. du by dr. Then derivative of r with respect to x, partial आएगा या ordinary आएगा? कितने independent variables है? 2 है ना? So क्या आएगा? Del r by del x. That's it. Say dr del r cancel. Now don't ask me how we can cancel dr and del r. Okay, this is only for understanding. So what is remaining? U by x. Yes. Replace x by y. So del u by del y equal to du by dr into del r by del y. Y here, y. Hope you are getting this. Write it. Can I go to the next page? Yes, sir. Okay. चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. Okay, third, right? U is function of xy, right? U is function of xy and x is some function of t, y is another function of t. Okay, so what is the relation? U function of xy, they are the functions of t. Yes, write the derivative. Write the derivative. So like this, derivative of u with respect to t. How many independent variables? Single. Therefore, ordinary derivative. Derivative of u with respect to x. Two independent variables x and y, na? So partial derivative. Del u by del x. Into what about derivative of x with respect to t? Ordinary. Plus derivative of u with respect to y. And derivative of y with respect to t. Okay, and you can cross check. X cancel from the first term, del u by dt. Y cancel, del u by dt. Last variable should be same. Yes, it is. Now let me cancel the dt. So du equal to del u by del x dx. This is known as total derivative. Total derivative of u. इसके नीचे लिखो in above case, suppose function is given as okay, then
चलो नेक्स्ट कुछ वन एग्जांपल्स मिनट वन मिनट डेल यू बाय डेल वाई ऊपर रहेगा ना गलत हो गया क्या? सेकंड सही है टू ना? दिया ठीक है ना? सेकंड लिख सकते हैं ना डायरेक्ट हाँ सेकंड सेकंड लास्ट हाँ हाँ दो हाँ दो यू बाय दो एक्स डिवाइडेड बाय दो यू बाय दो वाई माइनस में हाँ तो नॉट अंडरस्टूड द डाउट। एफ एफ लिखने की जरूरत नहीं होगी ना डायरेक्ट सेकंड लास्ट ही आंसर हो सकता है हाँ चलेगा ना, आपको समझ में आ गया तो यू राइट बाय योर ओन मेथड, नो प्रॉब्लम। हाँ सर चलो नेक्स्ट एग्जांपल्स थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, मुझे कंप्लीट करना है इसको आज, so that I can start with the last unit. Now type number 1, examples of type number 1. if इतने बड़े एग्जाम्पल शायद नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन यदि if we solve the big examples then solving the small example will be no any problem. Therefore let me go through the few examples. If if z equal to f of xy, where x equal to u plus v and y equal to uv, then prove that given है ना, समझ में आ गया ये रिलेशन? z is function of xy and x and y are the functions of uv. अभी लिखो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू u, ये आएगा पार्शियल आएगा, Yes, sir. सॉरी u आएगा यहाँ पे, so derivative of z with respect to x first and then derivative of x with respect to u, दोनों पार्शियल आएंगे. Then derivative of z with respect to y, remember derivative of y with respect to u भी नहीं लिखना है लास्ट, इसलिए it is always better to check the last variable, वो सेम होना चाहिए, u replace u by v. v यहाँ तक आ गए हम, अब इसके आगे लिखो derivative of x with respect to u, derivative of u is 1, derivative of v is 0, derivative of x with respect to v, derivative of u 0, derivative of v 1, so 1. Partial derivatives. Right, substituting
1 और 2 में उसको पुट करना है। तो 1 इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है तो थोड़ा सा मैं ज्यादा लिख रहा हूं। डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ पे है डेल यू बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 is modified. Now we'll modify equation number 2. Let me change the page. सर एक मिनट। हाँ हाँ लिख दो। हो गया, चलो let me change the page. ये है next on equation number 2 will modify as equation number 2 is del z by del v, आपके सामने रहेगा वो del z by del x और del x by del v, del x by del v is 1 plus del z by del y, del y by del v, del y by del v है u। Now we can start with one of them, left hand side or right hand side. Del z by del u is known from equation number 3. ठीक है, तो इसको मैं एक साथ लिखता हूं। फर्स्ट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड दे आर रिटन टुगेदर। अब सेकेंड टर्म को लिखता हूं। But what is u plus v? X. होप सबको समझ में आ रहा है। चलो और एक सॉल्व करते हैं। सर वो LHS से आगे प्लीज एक्सप्लेन करिए ना फर्स्ट प्लीज। हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इज u del z by del u plus v del z by del v है, उसको मैंने जैसे एग्जांपल में दिखाया वैसे लिख दिया, ठीक है। सो del z by del u दैट इज नोन टू अस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। del z by del u हमने इक्वेशन 3 में फाइंड किया था ना, एक बार इक्वेशन नंबर 3 आप देख लेना। हाँ, तो उसको लिख दिया मैंने, ठीक है। देन del z by del v, ये ऊपर इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 4 ये है।
है ना, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे और उसको सिंप्लीफाई किया है। मुझे समझ आ गया, क्वेश्चन से मुझे लगा कहाँ से आया, नहीं क्वेश्चन नहीं से आया, नहीं, सॉरी हाँ सर। है, हाँ करेक्ट, वी हैव रिटन इट फ्रॉम द क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले ले। सर ये थ्योरी में आते थे क्या क्वेश्चन लास्ट ईयर तक? हाँ, ये आएंगे लेकिन थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में आएंगे, सर इस तो बार क्या भी आएंगे। 15-20 मार्क को आते हैं क्या? नहीं, ये 5 मार्क्स के लिए आता था, 5 या 6 मार्क्स के लिए। ओके सर। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इफ if x equal to हाँ ये तो पता चला, x and y they are the functions of r and theta. R and theta they are the functions of t. Something wrong over here, huh? Since derivative of x with respect to t will be ordinary dx by dt, but here we have partial derivative. Should be t and s. सर आर कॉमा थीटा आर फंक्शंस ऑफ टी, तो टी पहले आएगा और बाद में आर कॉमा थीटा आएगा ना? ये वो ऑर्डर चेंज कर सकते जैसे हमें चाहिए, नहीं यहाँ तो सही ठीक ही है ना। एक्स वाई they are functions of r theta, so xy to r theta and then r theta functions of t, so r theta to t, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बाद में मैं सॉल्व करता हूँ या सॉल्व करके मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि एट दिस मोमेंट आई आल्सो डोंट नो हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल, माइट बी सम प्रॉब्लम इन द एग्जांपल that at this moment I don't know and I don't want to waste time on that at this moment, so please give me some time. Let me go through the next example. You might have written the example, try to solve it. If it is possible to solve, answer is with you, provide the answer to me. Timing, let me continue with the next example, we'll solve it, we'll come to the example later on. Okay, let me start with the next example. Right on. Third example, if that u equal to
f of rs and r equal to x square plus y square, s equal to x square minus y square, prove that y del u by del x equal to 4xy. That solution given सर आर कॉमा एस आएगा ना? यस सर, आर कॉमा एस है। R and S are functions of x, y. So derivative of u with respect to x partial, right? This derivative. X and y are two independent variables, therefore partial derivative. Derivative of u with respect to r first, again two variables, therefore partial, and then r with respect to x. Derivative of u with respect to s, s with respect to x, x here, x here, x here. Replace x by y. Y, y, y. R is given to us. Substituting values in one and two, these values 1, 2, they are here. Second, substitute them. So del u by del x equal to del u by del r into del r by del x, 2x. Del u by del r by del y. Three and four, huh? So I'll use 3 and 4 once I start with the left hand side.
Right, next. Turn up to the stage. चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट. Let me change the page. One minute. देखो. हाँ, ओके. थोड़ा सा एक बार चेक करना ये सही है नहीं. चल नेक्स्ट. Substitution. If इस टाइप का एग्जांपल, स्मॉल चेंज इज देयर. If u equal to f of e raised to x minus y, e raised to y minus z, e raised to z minus x, then ये हमें प्रूव करना है. Substitution PQR. E raised to x minus y, q equal to e raised to y minus z, r equal to e raised to z minus x. So u is function of what? PQR. समझ में आ रहा है PQR कहाँ से है जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है. And what we know about the P, Q and R, they are functions of x, y, z. No doubt in P, z is not there, but we can consider x minus y plus 0 z. Z का कोएफिशिएंट 0 कंसीडर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है सबको? For uniformity, though P does not contain z, but for uniformity we consider that P is function of x, y as well as z. Okay.
Now what is the relation? U is the function of what? P, Q, R. P, Q, R functions of what? X, Y, Z. Derivative of U with respect to X. Derivative of U with respect to P first. Then derivative of P with respect to X. Then derivative of U with respect to Q. Derivative of Q with respect to, it's not Y, huh? X. Last variable should be same. Yes. Replace X by Y and then Y by Z. Hope everyone is getting this. If not, let me know. Now replace Y by Z. Can I change the page? Sir, 1 minute. लिख दो. Done, sir. Okay. Next. Now start with the P. All right. P equal to सर पेज नहीं बदली. 1. Del Q by del Z. Z, huh? Last one.
1 will be del u by del p. Del p into del x. Del q into del x. Del r into del x. Second will modify. Del u by del p. Del p by del y. आ रहा है ना सबको समझ में? Everyone is getting this ना? Yes, sir. या थोड़ा सा मुझे चेक करने दीजिए लोग है या नहीं. आप सॉल्व कीजिए एग्जांपल को. मैकेनिकल रोल नंबर 31. Yes, sir. ओके. सिविल रोल नंबर 39. Yes, sir. वेरी गुड. आपका ध्यान है. वेरी गुड वेरी गुड. देन कौन अभी है? रोल नंबर 6 संकेत सिविल. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड. देन रोल नंबर 27 बी डिवीजन मालोजी निंबाळकर. हे कुठे गेले निंबाळकर? लढाईला वगैरे गेले के? मालोजी राजे किधर गए आप? मालोजी. कुठे गेले मालोजी? भावेश पाटील आहे का? भावेश सर आहे. व्हेरी गुड. आहे ना? भावेशचा नाही आवाज आला. भावेश के. देन यश रोल नंबर 36. प्रेजेंट सर. वेरी गुड वेरी गुड. रोल नंबर 1 मैकेनिकल. Yes, sir. वेरी गुड. देन रोल नंबर 22 मैकेनिकल निर्भय. Yes, sir. निर्भय होके पढ़ना है तो चलो पढ़ते हैं. चलो solve the example. Minus of e raised to x minus y del u by del p plus e raised to y minus z del u by del q. Last term will become 0. सर फिर डेल यू बाय डेल वाई डायरेक्ट 0 पुट किया तो नहीं चलेगा? del u by डेल वाई किधर आ गए? क्यों 0 कहाँ से है? सर वो माइनस और प्लस सेम ही तो टर्म है वो. नहीं ना, अलग अलग है ना. e raised to x minus y है, del u by del p है, e raised to y minus z है, del u by del q है ना? Understood or not? यस सर. सर वो राइटिंग छोटी होने की वजह से ना क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए हाँ लेकिन कंफ्यूजन हो क्या रहा है. है, इससे काफी बड़ा लिखेंगे ना तो देन आई एम नॉट एबल टू राइट द होल टर्म इन वन लाइन. नॉट पॉसिबल. क्या आप लैपटॉप नहीं यूज कर रहे क्या? हाँ जूम भी कर सकते हैं. और आप लैपटॉप नहीं यूज कर रहे क्या? मोबाइल है मोबाइल. हाँ मोबाइल पे पढ़ना डिफिकल्ट है, मैं समझता हूँ. नहीं सर, मोबाइल पे जो हो रहा है. नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट, नो डाउट.
अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, 5 6 7 सॉरी 4 5 6 को ऐड करते हैं। एडिंग 4 5 एंड 6। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखता हूं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड। चलो ऐड करो, ये चार इक्वेशन ऐड करने हैं। 1, 3 है ना सर? हाँ हाँ सर, 3 3 ऐड करने। सेकेंड, दिस इज थर्ड। सी द राइट साइड, डेल यू बाय डेल पी इक्वेशन नंबर 4 में है e रेस टू x माइनस वाई डेल यू बाय डेल पी, whereas इक्वेशन नंबर 5 में है माइनस e रेस टू x माइनस वाई डेल यू बाय डेल पी। कैंसल, फर्स्ट टर्म will cancel, del u by del p term will cancel. See sir. the del u by del r term in equation number 4 and equation number 6. One is positive, other is negative. Cancel. कैंसल। Right. Then see the del u by del q term in equation number 5 and 6. One is positive, other is negative. So what their addition will be? 0. कैंसल। 0। 0. और यही हमें प्रूव करना है, u of x plus u of y plus u of z equal to 0. Hope you might have understood it. Okay, one example for homework. आप क्या करो, जो क्वेश्चन सेट दिया है उसमें एग्जांपल है उसको सॉल्व करो। राइट, 5 उसमें क्या रहेगा, 5.72 नहीं रहेगा। आप इस टाइप के एग्जांपल थोड़े सॉल्व करो, वहां पे भी लिखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्लीज प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल्स, या 2 मिनट लेता हूं मैं, होमवर्क देता हूं, दैट विल बी बेटर आई थिंक। नहीं तो आप करोगे नहीं, बोलोगे कि मिला ही नहीं। चलो देते हैं, कुछ होमवर्क देता हूँ। पेज भी, चलो राइट। थोड़ा सा फास्ट। राइट, ए ज्यादा नहीं दूंगा, 1 2 ही दे दूंगा, 2 4 दे Sir, दूंगा। पेज पेज दो पेज की दो पेज सर। पेज 1 2 मिलके 3 होता है, इसके आगे जाएंगे तो 4 होता है। चलो होमवर्क, if u equal to f of x minus y, y minus z, z minus x, prove that second, if u equal to f of 2x minus 3y, one upon 2, huh? This is 1 upon 2, plus 1 upon 3, plus 1 upon 4. ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया। इसके पहले जो आज हमने एग्जांपल पढ़े कॉम्पोजिट फंक्शन के, और एक दो सॉल्व करते हैं। Prove that x for last,
X equal to U plus V plus W, Y equal to UV, V plus VW plus WU, and Z equal to U into V into Z. And F is function of X, Y, Z. Yes. These are the 4 examples. Today maybe at 7:30 we'll have extra lecture. 7:30 evening. I'll inform you. 2:30 को नहीं है? अरे हाँ 2:30 का एक लेक्चर है ना, हाँ मैं उसको बोल Yes, हाँ 2:30 का भी एक लेक्चर है और फिर इवनिंग को भी रखेंगे क्योंकि क्या है सैटरडे तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है एंड 1 यूनिट इज रिमेनिंग. लास्ट यूनिट इज सिंपल, नॉट सो मच डिफिकल्ट. क्या है सर लास्ट यूनिट में? इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करके हमें वी वांट टू फाइंड फंक्शनल डिपेंडेंस फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, एरर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है. ठीक है, ओके चलो 1 मिनट मैं अटेंडेंस जैकोबियन से क्या? हां जैकोबियन से क्या? हाँ जैकोबियन है, करेक्ट जैकोबियन. So attendance. How many people are here till 29? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गए सबके नाम आ गए. सिर्फ मुझे बताइए अजय धोत्रे, रोल नंबर बताइए आपका. प्रेजेंट सर. रोल नंबर 10 बी डिवीजन. B10. B10. चलो नेक्स्ट है अक्षय मेहत्रे. थोड़ा फास्ट. अक्षय मेहत्रे, अमृत पांडे, अंकुर शिंदे. A30 कशाचा? अमृत पांडे. A30. हाँ ठीक आहे चलो. त्यानंतर सर अंकुर शिंदे. B43 अंकुर शिंदे B43. आणि हे अक्षय मेहत्रे. बी डिवीजन आहे सर तो. ठीक आहे की हो. ठीक. आणि कोण राहिले काय? अरे बापरे अजून बरेच जण आहेत. मदिया कौस्तुभ. हा जरा सांगा मदिया माहिती आहे. B03 बोरणे कौस्तुभ किती? B03. हाँ ठीक है चलो. मदिया B54. ठीक है. नेक्स्ट ओम वाघ B53. ठीक है. हाँ ठीक है. ओमकार बोलके, ऋतुजा शेंडगे, शशिकांत माने, सुंदरम मगर, यश गिड्डे. B22 सुंदरम मगर. सर शशिकांत माने नहीं है वो, मैं गलती से वो पापा के अकाउंट पे से ठीक है किया. कोई प्रॉब्लम नहीं. A26. कौन सा? ये शशिकांत माने है ना वो A26. चलो ठीक है. नेक्स्ट B12 कौन सा? यश गिड्डे B12. यश गिड्डे B12. हाँ ठीक है. नेक्स्ट अथर्व कुलकर्णी B20. ठीक है. नेक्स्ट ओमकार आणि ऋतुजा शेंडगे. अरे काय तुमचे पेरेंट्स वगैरे लेक्चर अटेंड करतात काय? नाही ना, चला जावा. चलो थँक्यू सर. चलो भागो. थँक्यू. बाय सर. बाय बाय. सर हाँ बोलो गुड नाईट. बोलो सुन रहा हूँ. तुम्ही ते क्वेश्चन दिलेला ना सेकंड वाला